पानी के वजह से। ये पानी सोने से भी बहुत कीमती है तेलंगाना में। वो पानी के नाम पे जिसने लूटा है इस राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए जिसने लूटा है, उसके बारे में चर्चा होने के बाद हुकूमत कैसे चलाना, हुकूमत ला लिए हमको और कांग्रेस पार्टी को कहीं से सीखने का कोई जरूरत नहीं है। हम इतना प्लेटफॉर्म इसीलिए दिए, सबसे चर्चा करें, सबके सुझाव लेके सरकार एक निर्णय लेने के लिए हम चर्चा पे रखे। निर्णय आप लेने के लिए टेबल नहीं किए। ये पूरा कमीशन रिपोर्ट वी हैव टोल्ड, वी हैव गिवन assurance to 4 crore Telangana people, saying that we have told at the time of election we wanted to appoint a sitting judge inquiry on this Medigadda Annaram Sundilla barrages. We have requested to Telangana High Court to spare one sitting High Court judge. They have refused to appoint a High Court judge. They don't want to spare any High Court judge. Then they have given a suggestion. Why don't you take a retired justice? Then Congress Party, Government of Telangana has appointed a senior most Supreme Court judge, Pinaki Chandra Ghosh. He has worked combined Andhra Pradesh Chief Justice. He has worked Supreme Court judge. He has worked in Calcutta High Court. Same time, he has worked first Lokpal Commission Chairman. So his integrity, he has addressed Shashikala case, Jayalalitha case. He has given many judgments. Then we have appointed one-man commission, PC Ghosh Commission. He has taken almost 1.5 years time. He has examined everything. अकबर साहब ने ये कह रहा है कि एनडीएसए रिपोर्ट आप नहीं दिए, विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट आप नहीं दिए, कार्ड रिपोर्ट आप नहीं दिए, फिर पीसी घोष ने कहां से ये पूरा लेकर कहां से वो रिपोर्ट लिखेगा? Sir, we have given everything. So that is what I wanted to correct your records. Sir, he has referred everything. NDSA report, he has referred vigilance and enforcement report. You go through this. See, Akbar साहब, ये आप पूरा पढ़ो. 600 साहब, नहीं. आपको मैं पेज वाइज दिखाता हूं. He has gone through everything. No, you are absolutely wrong, Akbar साहब. नहीं, आप नहीं, हम सरकार चला रहे, हमें पता है. We have no. You go through this page. You go through the 600 and I will give you. नहीं, अरे साहब ये बुक ले लो, सेकंड बुक ले लो. सर आप पूरा देखो, एनडीएसए रिपोर्ट. अकबर साहब पूरा पढ़ो, बिना पढ़े आप मत बोलो. नो. अकबर साहब, कभी कभी हम इंसान हैं, कोई भी गलतफहमी हो सकता है. आप मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त. ये इसका मतलब ये नहीं है आप विदाउट वेरीफाइंग दिस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट you cannot make such type of statements. Right. I'll now give me the mic. I'll say. So let me complete. I'm not yielding, Akbar Sahab. I'm not yielding. No. You are scolding like anything. I'm sorry. Absolutely, I'm sorry. I'm not going to yield. You have taken much more than 1 hour. No. आप बुक किताब कुछ भी पढ़ो, मगर गलत नहीं बोल सकते आप. नहीं, आप गलत नहीं बोल सकते. आप अगर वो सचमुच रहा तो सर, I have to answer. I'm the floor, I'm the leader of the house. I have to answer every question. I have to address every member. I have to reply. No. You cannot.